क्विक रिवीजन कर दवा सरिला समस्त who have completed anyone के कंप्लीट कर ले ना के करना गत काली क्लास रे कहउतले पिला कंप्लीट कर दिथिले आ जॉइन करना दे यार कंप्लीट ही जाई भाग्यश्री कंप्लीटेड वेरी गुड ठीक अछि ओके तो कमिंग विथ द सॉरी स्क्रीन शेयर करने को सेकंड जस्ट वन मिनट रिकॉर्डिंग अच्छी लेट्स स्टार्ट ओके तो फटाफट आंसर दवा समझते हाँ क्वेश्चन नंबर 151 which institute released the guideline for the child suspect in the heroin offense K co institute it's option NCPCR. C हाँ NCPCR ठीक अच्छी तो NCPCR stands for the National Commission for the Protection of the Child Rights okay तो जनरली कौन हुए कि चाइल्ड्स मानू छोट छुआ को जदि कौन क्रिमिनल ऑफेंस रे अरेस्ट करा हुए से मानू माने डायरेक्ट प्रोसीजर रे ट्रायल करा जाय परिबो नाही से मानक पई ऑलरेडी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 एग्जिस्ट करची ओके सो बेस्ड ऑन दैट दी शुड बी तो से मानक पनिशमेंट को हुए से मानक करेक्शंस को हुए करेक्शन को से मानक पठा हुए ओके तो लाइक दैट वी नो दोस फैक्ट्स ओके सो रिगार्डिंग दिस फर्स्ट टाइम गोटे ऑफ माने जदी चाइल्ड सस्पेक्ट्स होचंदी जो माने कि किछि ड्रग केस रे एनडीपी जो एनडीपीएस एक्ट जदी related materials रे जदी सेमान धरा पड़छंती so what should be the approach okay so that guidelines has been released by NCPCR okay you should be aware of this vegetable production system veggies kochu taku veggie kochu is associated with which space agency this is फटाफट anyone this is NASA okay very good this is NASA कौन करिवो जो इंटरनेशनल स्पेस हम सेंटर अच्छी जोटा तो सहीटी किछि वेजिटेबल प्रोडक्शंस करा हो सो दैट जो भी सो फर्स्ट जिंस दीटा एडो फायदा हबो जो भी एस्ट्रोनॉट्स पर सहीटी रहउछंती तो से मानको डाइट रे वेजिटेबल्स को ऐड करा जे परियो फर्स्ट जिंस सेकंड जिंस कोन जो माइक्रो ग्रेविटी बिकॉज़ in the space the gravities are almost nil so it's not completely nil it is very less so microgravity conditions रे केमिति वेजिटेबल ग्रो करा हे पारुची तांकर न्यूट्रिशनल वैल्यूज कोन चेंज होची कि so based on that the studies can be done okay so moving ahead which is the host city for G20 minister of sorry meeting of agricultural chief scientist the important no है question this is Varanasi next is भोग बिहू तो भोग बिहू कोठी सेलिब्रेट कराउची ऑल बिहुस वी सेलिब्रेट इन द स्टेट ऑफ फटाफट आसाम ओके वेरी गुड ठीक है हाँ तो तारा जो बिहुर जो फर्स्ट डेट आता है ताकू माने इट इज द फर्स्ट डे जोटा कि डेडिकेट करा हुए कैटल्स मानन को बिकॉज़ दे प्रोवाइड लाइवलीहुड कैटल्स प्रोवाइड द लाइवलीहुड टू कमेमोरेट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द टू सेलिब्रेट द contributions of the livelihood the cattles in the livelihood so the first day is dedicated to the cattles next which is pohela boisak तो पहला बैसाख तो ना ही कहूँ इट इज ए बेंगोली वर्ड तो इट्स वेस्ट बेंगल बेंगल रो न्यू ईयर को आम सेलिब्रेट करछु नॉट इम्पोर्टेंट okay which blog has set up an set up a task force to monitor the operation AI sorry open AI chat gpt chat gpt कोन की कहि परियो व्हाट इज chat gpt बहुत न्यूज रे ट्रेंड होइत अछि this is you answer is you okay apart from that what is chat gpt anyone it's a AI based tool obviously kaharo microsoft ro chat gpt who knows about chat gpt science and tech ro to padhiya SpaceX ro okay it's open AI yes open AI ro nuho open AI hochi gote open platform okay open AI to kichi nuho open platform gote so what's the difference between a chat gpt or a search engine google or chat gpt with a difference anyone can you tell me so it's not a time pass question okay this type of questions you may expect in your science and tech maybe in the prelim maybe in the mains in form of the statement in forms of descriptions anything do you know
or not? सर गूगल सर्च इंजिन रे मे बी जो माने रिप्लाई Hmm. आसीबो सेटा मोर ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन कंपाइलेशन हेले Yes. चैट जीपीटी टिके ह्यूमन मोर ऑफ रियल ह्यूमन और Yes. इंटेलेक्ट Hmm. माने इंटरेक्शंस बट माने इंटरफेयर दाव माने ताको Yes. कोनते मोर ठीक से प्रकार रो ही इंटरफेस प्रोवाइड करबो ठीक, very good. So the basic difference which is, suppose we are searching anything in the Google, so what we are getting lot of links. Okay, suppose you are searching best material for UPSC, ठीक है, so n number of links they will be providing. So it's a search engine, it search only for the links. So तारो internal mechanism छाड़ दियंतु, but chat GPT will not give you like this. So chat GPT will provide you a specific answer. So it's like a, so आमे सर्च इंजिन परे जो रिजल्ट्स आसुची एज ए ह्यूमन आमे आम इंटेलिजेंस लगे कि चेक करूछु जे फॉलोइंग लिंक्स भितर बेस्ट जिंस कोन. So that work is also being done by your search engine, माने जो भी AI रो. हाँ, chat GPT has the feature like making a thesis, providing recipe of cooking. Okay, so that is what human रो जो हमरो thinking process ताची, that is involved. So it comes with a specific answer. Okay. Let's do next. The cabinet meeting on the security recently approved the sector headquarter in which state? Sector headquarter कौन कोटी करिछि? This is Arunachal Pradesh. Answer is actually जो हमर ITBP अछि, तो ITBP रो किछि नुआ रेजिमेंट्स क्रिएट करा हिछि और सेमानको गोटे सेक्टरल हेडक्वार्टर्स क्रिएट करा हिछि इन अरुणाचल प्रदेश. कौन पई? Obviously जो चाइनीज एग्रेशंस अछि along our McMahon line to combat those things. ठीक. Coming to next one. हाँ, so Metarhizium indicum. So Metarhizium indicum, what is this? This species is belongs to co species को belong करछि this name. This is a fungus. Okay. So Indian Institute of Spice Research होछि Kozhikode रे. So sometimes no, we have to take these informations also कि माने यदि questions पचारे Indian Institute of Spice Research कोड अछि, तो by doing multiple MCQs also we are also gathering this type of static information. तो एटा अछि Kozhikode केरला रे अछि. तो सेही माने को देखिले कि ए पर्टिकुलर स्पीसीज जो गोटे फंगस स्पीसीज बर्तन स्प्रेड होछि जहारो इंपैक्ट रे जो मालाबार टैमरिंड्स अछि माने तेंतुड़ी जो, so that is being affected. Okay. तो as per the banking on the climate and chaos report, तो को बैंक अछि जे कि टॉप सब हाईएस्ट फाइनेंसिंग करिछि फॉसिल फ्यूल्स पे, जोटा कि करिया कथा नुह. तो दैट्स इट, जेपी मॉर्गन. तो नॉट दैट इंपोर्टेंट. नेक्स्ट होची भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन. तो एटा कहा पार्थ यूनिवर्सिटी रे फ्लैग ऑफ करा हितला? दिस इज आंसर इज अंबेडकर. ठीक अछि, वेरी गुड. नेक्स्ट होची व्हिच स्पेस एजेंसी लॉन्च करछि जूस मिशन? ऑलरेडी हम देखि छे जुपिटर, आईसी, मून एक्सप्लोरेशंस. तीनटा मून कथा देखितले. व्हाट आर द थ्री मून्स ऑफ जुपिटर? एवरीवन. ହଁ ସାର୍ କାଲି କହିଥିଲେ। हां, कोन कोन थिला तीनटा इंपोर्टेंट मून? तीनटा थिला. आई एक्सपेक्ट एवरीवन इज रिवाइजिंग. यूरोपा, गैनीमेड, आउ कौन रिवाइज करथांते कि? प्लीज रिवाइज करंतु, अदरवाइज दिस इंफॉर्मेशन यू विल लीव. हां, यूरोपा, गैनीमेड तो मु कहितली. आउ कौन पछु जाई खोजी देखिए. डू रिवाइज है मु केतरा जिंस तो आपन को ऊपर छाडी. नो नो, इट्स नॉट टाइटन. इट्स नॉट टाइटन. कैलिस्टो. इट्स कैलिस्टो. ठीक है. तो कैलिस्टो, यूरोपा एंड गैनीमेड. तो ताकू बिकॉज दोज थ्री आर द जायंट मून्स ऑफ योर लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो ताकू एक्सप्लोर करिया पे, तारा इनसाइट्स फाइंड करिया पे यूरोपियन एजेंसी एटा रिलीज करथिला ए गोटे स्पेस प्रोब. यू कैन से दिस इज ए जूस प्रोजेक्ट. ओके. So JUICE project stands for this, Jupiter Icy Moon Exploration. See, once we have done with the class, immediately do revise yourself. Okay. Otherwise, na ए जिंस ना बहुत ही obsolete information है कि रही जीवो. At least class कले किछ informations मिलिला ताकू फटाफट revise करते हुए, ताकि आउ revision न कले भी माने you can do the revision before your examination. You won't be finding the information like lot alienated. Getting my point? Moving ahead. तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कोठी अछि? टू डिस्ट्रिक्ट, टू स्टेट रो बॉर्डर रे अछि.
It is in Andhra Pradesh and Telangana. Telangana. Obviously माने प्रथमे आमे आंध्र प्रदेश ही कहथलु बर्तमान तेलंगाना अलगा हे गला so that's why Andhra Pradesh and Telangana. This is the largest tiger reserve. Question रे ना already आपण जे देखियो, if you have gone through the ecology questions of previous years, you have this UPSC रे questions आस्ते एटा के largest tiger habitat of India. तो single habitat of India जदि आमे कहिबा, it is the Nagarjun Sagar Srisailam. ठीक अछि. So which city is going to host the G20 Space Economy Leaders Meeting? Space economy related. This is Lungs. This is Shillong. Okay, Meghalaya. So which Indian state of the UT announced करछि B.R. Ambedkar Award for recognizing peoples involved in the welfare of Dalit? Dalit को welfare को पाई को institute करिछि, sorry को state करिछि. This is by the state of Tamil Nadu, sorry, Telangana. This is by the state of Telangana. Okay. So which city is going to host the global conference on the compressed biogas? Compressed biogas ପାଇଁ तो एटा न्यू दिल्ली करियो, एते बड़ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नुह. तो से गोटे थीम अंडर करियो टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रोबस्ट सीबीजी माने compressed biogas फाउंडेशन एंड ग्रोथ. ओके, जनरली compressed biogas रो बहुत अधिक यूसेज नाही आम कंट्री रे, सो टू एनकरेज इन दैट फील्ड दिस वाज द इनिशिएटिव. Okay, which country is host of the SCO Millet Food Festival? तो millets वगैरह देखो तो को कंट्री रे होतु, obviously इंडिया रे ही होतु, तो this is India. Next, Virginia Norwood जे recently pass करी जाइतले, he is associated with which field? He is associated with the aerospace. Okay, he is a aerospace pioneer थिले. Okay, he or she, he only no, C, sorry. तो generally ना गुड़ा जना पड़े ना. Which virus has recently found to trigger the cancer? तो cancer को trigger करछि किए? This is the आपको pronounce केमती करिवे, even I don't know. This is option A, Epstein-Barr virus. Okay, so this is the virus जे कि cancer को promote करुछि, trigger करुछि. हाँ, EBV. Very good way to remember. Which union ministry is set a draft SOP for the safety and security of journalists? Obviously it is a draft, we don't need to go detail, but still this is union home minister. Recently जो journalist को माने बेसरे आसी जो firing हेतला, gangsters रो killing हेतला, gangsters नहीं, gangsters turn politicians. You might have heard about that news. जो the decision was came after 3 assassins posing as the journalist killed the gangster turned politician जो आतिक अहमद और तारा जो ब्रदर प्रयागराज रे जो फायरिंग हेतला. सो आफ्टर दिस डिसीजन वाज विकास दुबे कथा कहउछन कि कोन कहले? विकास दुबे कथा कहउछन कि नो, नॉट विकास दुबे, आतिक अहमद कथा सुन नथले, बहुत न्यूज रे थिला से. everyone I think you might have come across this news. पिरो हाँ, यूपी रो. ओके, बहुत ट्रेंडिंग चलथिला, समस्त तो सुनी थिबे. हाँ, ठीक अछि. तो जदि सुनी नांती गोटे भलो जिंस जे obviously you are not following this trendy news. Okay, not that great in terms of exam is concerned. Who was recently crowned Miss India 2023? I think boys will be able to answer this. Okay, Nandini Satrapati. के ऑप्शन? हाँ, नंदिनी गुप्ता. Okay, very good. Which institution has developed a low-cost camera for the multispectral imaging of the flame? Flame रो गोटे flame को आमे तार different spectrums अछि, because it's flame गोटे देखुछन ना केतोड़ माने गोटे तार गोटे अलगा shape size थाए ताकू detail study करिया पे. तो it was done by the IIT Indore. Not that great news. Okay, I'll be telling what is very important. I'll tell you what you can skip like that also. Which union ministry is associated with the CAPF टा कहाँ under आछी? Home under Australia. It's under home. Very good. हाँ, तो आमे जो गोटे क्वेश्चन रे कंफ्यूजन थिले जो CBI कथा था, it was personal. Okay, the information that I have told you was wrong. It was not under home, it was personal. Okay, so that's all. The Siachen Day आमे को दिनो celebrate करछु. It was associated with which operation? Operation Meghdut. Okay, तो केबे हितला? It was in माने 13th April. It was 1984 रे आमे Siachen glacier कमांड आम हाथ को नहीं थिलु. Okay, by retreating the Pakistani forces. Okay.
तो west of the Saltoro Ridge they have retreated, and till from that day till now it is under the control of Indian forces. Okay. So in which state Saurashtra Tamil Sangam is originated? Saurashtra is in Gujarat. Tamil is in for the Tamil Nadu. तो Tamil Nadu और सौराष्ट्र रो गोटे you can say गुजरात और तमिल नाडु रो जो तांकर कोऑपरेशंस को एनलाइट करिया पे बा शोकेस करिया पे तो this is the initiative. It was taken place at Gujarat under the under the initiative एक भारत श्रेष्ठ भारत. Okay, it is written over here. ठीक अच्छे. Next, Chairobora is the festival. तो को state festival Chairobora. Chairoba. Okay. This is Manipur. This is the festival of Manipur. Taku se lunar year first day, beginning of their lunar year. Actually lunar year and everything. Tibet और China side रे गोटे तांकर festival हिसाब से celebrate करावे. तो same जिनसो India रो north eastern states से मध्य किसी जगह celebrate करंती. Again, it is also known as Sijibu Nongma Panba. Okay, so this is also known as the same festival ko in this name also. And try to remember these type of festivals because festivals are art and culture viewpoint important. Okay, Imam Ali bin Abi Talib. Okay, so some Imam was there. Okay, so eita co state so is associated with which state? Is associated with Ladakh. Okay, so he is considered to be the last caliph of the Rasidun Caliphate. Okay, so CS माने सिया community रो what important can say caliph. So he belongs to you can say Ladakh. Okay, associated with the Ladakh, not belongs to. Then when is the World Hemophilia Day is observed? Not important. It is April 17. Where is the Army Commanders Conference hitila? It was at New Delhi. Okay. So who has been conferred with the Maharashtra Bhushan Award? So it is option A. Appa Saheb Dharm Adhikari. Okay. So ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ. ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ କନଫର୍ଡ ଏଭ୍ରି ଇୟର ବାଇ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର. ରିସେଣ୍ଟଲି ଆକୁ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହ କନଫର୍ଡ କରିଥିଲେ ଟୁ ଦିସ୍ ପର୍ସନ. ଓକେ. ନ୍ୟାସନାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଆୱାର୍ଡ ୱିକ୍ ତ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ମନ୍ଥ? ଇଟ୍ ଇଜ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ ଏପ୍ରିଲ. ଏନିହାଉ ଆମେ ଏପ୍ରିଲରେ ପଢୁଛେ ତ ଏପ୍ରିଲରେ ହିଁ ଥିବ. Next, as per the United Nations Population Fund, which is the state, which is the country is expected to be most populous. जानिचे इटा news इतला India was the most populous. Expected population सोची India रा 1.429. Obviously, our census है नहीं. Official census असले proper data आसियो that we are going to follow. Till then, you can follow this type of data also because it is a UN organization. Okay. Next, Mount Annapurna. It is situated in which country? This is in Nepal. Okay. So news रे company थिला गोटे Indian mountaineer जने थिले. Then Anurag Malo, he got missing he जाइथिले after falling into this crevasse. So but से पुणे आसे rescue हे जाइथिले live condition. Okay. So that's why it was in news. So obviously say mountaineer जे भी climber थिले तांको ना पचरिबनी but these related information they can ask. Which state in India become the first state to adopt the water budget? So first time पे water budget को की adopt करिछि? Anyone? Kerala. It is Kerala. तो water budget रो अर्थ कौन? तो water आमे केते use करछु, per capita usage केते होछि, पंचायत level रे use केते होछि, household level रे use केते होछि. We don't use to calculate those data, but water is becoming a scarce resource in due course of time because of populations and exploitations of groundwater. UPSC रे बर्तन क्वेश्चंस आस्तला गोटे ग्राउंड वाटर रिलेटेड. एनीवन हैव गॉन अक्रॉस दैट क्वेश्चन? इंडिया एक्सप्लोइट केते परसेंट वर्ल्ड रो माने ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोइट करछि? ऑन दैट note the question was asked. Okay, anyway we are going to deal all those things in the PT. It is already there 365 right? Okay. Next is Kisan Sampark Abhiyan program. So it is associated with Jammu and Kashmir. ठीक अच्छे. तो ensure overall welfare of the farmers. Which fungus is associated with a recent outbreak जोड़ा कि atypical
phenomena at the paper mill in the Michigan, USA. Not important. तो एटा गोटे टाइप रो ब्लास्टोमाइसिस थिला ठीक अछि तो वेयर इज द इंडियन स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस हेल्ड हेतला दिस वाज मुंबई नॉट इंपोर्टेंट नेक्स्ट श्रीजा नेशनल कॉन्फ्रेंस तो एटा हेतिला जो ऑप्शन डी ए डबल आई ए दैट इज कॉल्ड इन इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा it was related with the female infertility ठीक अछि which is the regulator which regulator has come out with a dispute resolution mechanism for limited purpose clearing corporations see news देखले जना पड़ुछि जे एटा को टाइप रो limited purpose clearing corporations तो माने को टाइप रो बॉडी थिपो this is something related to the stock market and everything so obviously this will be done by your SEBI okay next is villa of Quintelli okay so this is located in Italy okay then which institute has developed a device that named artisan to screen artisans to screen the cardiovascular diseases तो cardiovascular disease को screen करिया पे IIT मद्रास गोटे device design करिछि who has been conferred with the Malcolm Adisesa award 2023 कहा को दिया हिछि it was conferred to उस्ता पटनायक ओके उत्साह पट्टनायक तो से कौन थिले तो फेमस इकोनॉमिस्ट ओके माने से सोशल साइंस सेक्टर रे तांको अवार्ड दिया हिछि जेएनयू रो जने प्रोफेसर वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड दिस इज इंपोर्टेंट यू शुड रिमेंबर वर्ल्ड हेरिटेज डे April 18th we are celebrating okay it is to preserve the human heritage and this is to preserve the human heritage okay good second human heritage and recognize all efforts of the relevant organizations तो सेमान को माने preserve और celebrate करिया पे we are celebrating the world heritage day in which year indirect discrimination was recognized in the equality jurisprudence equality jurisprudence amaro ko article ro mane ko part re asuchi this is under fundamental rights equality कोड asuchi ko article exactly fundamental rights 40 sorry 40 okay so part 3 14 okay very good तो एटा कोन कहया को चेष्टा करछि कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन ए पर्टिकुलर देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन रे एवरीथिंग इज नॉट मेंशन्ड ओके if you want to have the elaborations of the constitution there are two ways either parliament have to come with a particular act and law जेमते हमें देखुछु डिफरेंट एक्ट्स गवर्नमेंट नै के आछि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो बा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो बा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो बा XYZ एक्ट्स हो so those are called the bare acts bare acts अर्थ कोन गवर्नमेंट तो मन इच्छा एक्ट कोटे नै के आसी परिबे those acts should be in sync with the provision laid down by the constitution clear एटा कोटे प्रोविजन हला सेकंड कोन हे परिबो इट कैन बी द इंटरप्रिटेशन बाय द जुडिशियल अथॉरिटी डज नॉट मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन गोटे माने सब डिवीजन लेवल रो गोटे जुडिशियल अथॉरिटी करियो ईदर बाय द हाई कोर्ट और बाय द सुप्रीम कोर्ट they are doing the judicial interpretation suppose equality under the article 14 covers which of the type of equality okay and which type of actions comes under the discriminations like that okay बुझी पर्सन समझते तो ए सब जिंस रो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के दबो तो that can be done by your judiciary okay judiciary in the sense high court supreme court or anything तो it was first in which year ओ वर्ष रे प्रथम थर पई सुप्रीम कोर्ट कहितला जे indirect discrimination ए जो वर्ड ता होची this particular terminology not word comes under the equality jurisprudence माने equality रो जो ambit of judiciary authorities अछि ता भितरे this word is involved it was came in the year which year 2018 रे आस्तिला जतबेले डीवाई चंद्रचूड से बेंच को माने से बेंच रे से थिले जे आज डेट रे हमरो डीवाई चंद्रचूड इज द ही इज द CGPA सर चीफ जस्टिस ओके तो जतबेले होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करा हला तो देन दिस पर्टिकुलर थिंग केम इनटू पिक्चर तो होमोसेक्सुअलिटी वाज डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी अंडर माने हमरो को सेक्शन अंडर रे थिला
IPC 498 बोलते सर. IPC 377 ना? सर मोर ख्याल नहीं से 370. It was 377. IPC 377. So once now it is decriminalized. Then with the in India, same-sex marriage is allowed. नहीं सर एई नहीं पर्यंत सेटा सर. तो हेले decriminalize कौन कला? सर ସେମାନେ ଏକାଠି ରହି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମ୍ୟାରେଜ ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସେଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଭାଗିଦାର ହେଇ ପାରିବେନି. ତାର ମିନିଂ ଟିକେ ଅଲଗା ରହୁଛି ଆଉ ଏକାଠି ରହିବାର ମିନିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲଗା ରହୁଛି. Okay. No, same sex. Satya Sagar, you are right. Okay. तो अपन जो allowed कहले जे allowed कहले no, it is not yet allowed. Allowed in the sense कौन कि देखंतु सेटा माने what Supreme Court has done. Supreme Court told कि same sex माने जो homosexuality is not a criminal offense. There are two things. One is a criminal side. माने आपण जदि जने homosexuality जो two persons are involved, then before that decriminalization, they can be imprisoned or they can be you can say they can be brought into your you can say court just because they are violating certain principles or certain guidelines. Okay, that was been decriminalized, that was dropped by the Supreme Court. That was one part. Second is again there needs to be acceptance towards the same-sex marriage. That was not yet done by you can say any of the authority. कौनसी act pass करा ही नहीं. जेमती कि आमे कौन कहूचु जेतबेले two persons are marrying ए माने two different gender रो सेतबेले आमे को protection केमती मिलुची society काली कैसे कि जण को so it is not allowed under the Hindu marriage. Okay, not only Hindu marriage act. So Hindu marriage act is just one part. Okay, suppose दी जण मैरिज करछंती काली के सोसाइटी आसी से मानको भितरे तुम केमती मिसी की रहि जाउछो that they can't tell because there is a protection as you told. It is under the Hindu marriage act, under the माने हमरो माने कोन दा कहउछंती आ गोटे भी अछि that is called civil स्पेशल मैरिज एक्ट. हां हां सॉरी स्पेशल मैरिज एक्ट. सोशल मैरिज. ओके, माने जोटा कि ऑल रिलीजन को माने कवर करू. हाँ, स्पेशल मैरिज रो हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट दैट इज देयर. तो यही प्रोविजन थ्रू रे ना you can register yourself, okay, as a married couple, so that no society can come between you two guys, so that okay, know how you are staying together and all those things. But those provisions are not incorporated in terms of your same sex. Okay, so till that point, so that's why they are still fighting to get that recognition. Okay, so be clear कि same sex marriage अभी पर्यंत इंडिया रे allow है नहीं. Okay, still it is going on the discussions, but based on the two same sex activity they cannot be you can say criminalized. तो से मानो को imprison की करि परिबनी. So that needs to be cleared. Next, what is Ramban? What is Ramban? It is a mobile clinic, not that important. Next, Aragam, okay, which was said to made as India's largest book village. Aragam hochi gote village ro na that will be India's largest book village is in the which state? It is in the Jammu and Kashmir. Okay. So which institute launched the State of World Population Report? एबे टिके आग्रो में पढ़थिले United Nation Population Fund. So option will be B. तो तंकर टैगलाइन जो थिला द रिपोर्ट रो टाइटल देथिले it was the 8 billion lives infinite possibilities. Next is Miguel Diaz Canal. Okay, so এটা গোটে জনকৰ নাম. He is the president of which country? Cuba ro. So second term ପାଇଁ ସେ elect ହେଇଛନ୍ତି. Not very great news. So which institute launched the coalition of the coastal cities to combat the maritime litter? It is by the Center for the Science and Environment. Okay. যদি কিছু বহুত বড় ইনস্টিটিউট করথান্তে আমি মন রাখিথান্তে, but okay news. When I am telling, just go through once. Coalition of coastal cities to combat the maritime litter. This is by the Center for Science and Environment. Okay. So which union ministry has launched the National Climate Vulnerability Index? Ki release kuruchi Climate Vulnerability Index by Ministry of Science and Technology, because we will be getting confused a question re amku lagibo amaro a ministry kuruchi Environment, Forest and Climate Change, but this is done by your Science and Tech. Okay, so option is your B. Next, which country has to launch 1 billion meal endowment campaign?
This is by UAE launch कर जो Ramadan चले मुस्लिम्स करो तो सही समय से लॉन्च करती 1 बिलियन मील तो कहा कंट्रीज मानक ପାଇଁ provide the food security safety net for the marginalized population in the countries that are struggling with the food insecurity ପାଇଁ ମାନେ जो माने struggle କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ this initiative was launched by UAE. That's all. This authority holding sealed particulars is associated with Ministry of Defense. Sealed अर्थ कौन कि डिजाइन्स वगैरह तार पैटेंट ये सब जिनसो को जदी होल्ड करे कोटे ऑथर माने एंटिटी होल्ड ता पाखरे से ब्लूप्रिंट्स वगैरह थाए सो दैट इज कॉल्ड द अथॉरिटी होल्डिंग द सील्ड पर्टिकुलर्स तो ता पे प्रॉपर गाइडलाइंस इंडिया रे नथला इट वाज रिसेंटली डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल अर्थ कौन ऑलरेडी गोटे एक्ट एग्जिस्ट करूची से एक्ट रे किछि नुवा रूल्स को इंट्रोड्यूस कराला. इट इज कॉल्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल. इट वाज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्जिस्टिंग एक्ट ऊपर ए रूल्स को छड़ा हिची. यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे. इट इज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल एक्ट 1960 अंडर रे. ओके तो कौन करिबो ए जिंसटा सो जो स्टे डॉग्स गुडा क्वेश्चन ना तो सेम मानन को केमिति स्टेरिलाइज करा जाय परिबो इम्युनाइजेशंस करा जाय परिबो तो दैट इज गोइंग टू माने जो लोकल बॉडीज लोकल अथॉरिटीज रहिले म्युनिसिपैलिटी पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस सो गाइडलाइंस वेर एनैक्टेड फॉर देम. ठीक अछि. तो साइंटिस्ट ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूट हैव रिसेंटली आइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन वेव्स तो फर्स्ट टाइम पे की डिटेक्ट कर इंडियन Antarctic station. Okay, so they have done this. They have found this electromagnetic ion cyclotron. Okay, so which Indian scientist has demonstrated that the plants feel pain and have sensation. Okay, तो की करछि सेटा तो जगदीश चंद्र बोस इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट माने करिसंती तो ए ग्रुप ऑफ रिसर्चर फ्रॉम द तेल अवीव यूनिवर्सिटी इजराइल have reported that their team pick up distress noise, very distinct, okay, high pitched sound in ultrasonic range made by the plants when they face stress. ठीक है. The phenomenon started a century ago by the Indian scientist जे जगदीश चंद्र बोस फर्स्ट टाइम पे से जिंस को से माने रियलाइज करिथिले. Then it is now recently taken up by the university at the Tel Aviv, Israel. Okay, that you should remember. What is the name of the legal status that grants specific rights and responsibility to the same-sex couple? Same-sex couple को थामे टिके अगर पूछते तो सेमान को जो rights grant करा हुए जो type of rights तांको दिया जाए तो ताको कौन कुहा जाए? It is called the civil union. Okay. Next, what is the name of the hybrid solar eclipse that will transit from annular eclipse to total eclipse? Actually na eclipse chari prakar. You have to understand this. There are 4 type of eclipse. There is total eclipse, partial eclipse, hybrid eclipse and annular eclipse. Mane not going into the deep, so just etiki bujha ko total eclipse ortho kon total mane you can see mane total jo moon ro eclipse hoche. Okay, partial gote part re hue like that, total, partial, annular, hybrid. So gote event हुए, in that event what will happen, ये जो first annular eclipse हबो तापरे से total eclipse को change हेजिबो, then again it will back to the annular eclipse like that. Okay, so that event, that name से type रो जो hybrid solar eclipse होचे ताको कोन कहजे? It is the option A, Ningalo eclipse. Okay, it is the Ningalo eclipse. Next, what is RESI? So what is RESI? एटा होची नासा रो गोटे डिफंक्ट सैटेलाइट माने बर्तमान यूज हो नाही से सैटेलाइट ता रिसेंटली सेटा क्रैश कर जायतला इंडियन एटमॉस्फेयर भितर को. फाइनली इट वाज स्कैटर्ड इन द सहारा डेजर्ट. ओके, देन व्हिच इंस्टीट्यूट हैज रिलीज्ड द ग्लोबल फूड प्राइस रिपोर्ट 2023 की रिलीज करछि? ग्लोबल फूड प्राइस, इट वाज बाय योर इंटरनेशनल फूड प्राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके,
Next, what is the name of the device developed by the scientist of the Hodgson Methodologist Academic Institute that will deliver drugs ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ deliver କରିପାରିବା directly to the pancreatic tumor? Okay, so device ର ନା କ'ଣ? So it is the nanofluid drug eluting seed. Okay, so it was developed by the institute. Which institute? Institute of Hodgson. Okay. Next, what is the Tripedala myponsis? Okay, what is this? Eta kono? It is a jellyfish. Okay, it is a box jellyfish. Jellyfish. So jellyfish गुड़ा को कौन था? Whether jellyfish are venomous or non-venomous? माने humans venomous थांती. तो safely हमें धरी परिया कि jellyfish को? से कोन थाए ताको भितर किछि टेंटिकल्स टाइप रो किछि जिंस थाए जोटा कि हमर ह्यूमन बॉडी रे पेनिट्रेट कर साला परे किछि फ्लूइड ना कोन किछि इंजेक्ट करे जोटा कि हमर आज्ञा वेरी गुड सेटा स्वेलिंग आउ हमर जो कहबा it can be fatal also. Okay, so that's why you should remember in that way. Next, in which state is the Rongali festival? I'm पढ़ी थिले already. से जो बिहू टाकू से रोंगाली कोचन आसाम रो. Next, Rockwell B1 Lancer is the fighter aircraft of which country? It is the USA. What a fighter aircraft. The aircraft has been participated in the exercise. जो कोप इंडिया exercise हमें पढ़ी थिले. इंडिया और यूएस रो एयर फोर्स रो जो होची कोठी हितला कोप इंडिया. Remembered? West Bengal. Okay, तो सही टी यूज होची. मु थरे पढ़ची मो मन अछि केमति भूली गेले समस्ते. I think आपको homework देबा कि homework देखि random question पचरिया. So everyone will be thorough with this. What will be the better approach? Not, I am not telling in my perspective. तो आपण अनकर perspective better learning केमति ही परिबो. केमति गले मन रहिबो? Competition mentality. Anyone? Homework. Agra. What is Agra? Price daba. PDF ta provide karantu before. Already provided na. I think I have sent this PDF. PDF देई नहीं मु. PDF तो दे दीजिए ना. Anyone? PDF देई ना नहीं? Yes sir. देई तो. ओके आप लेट रे जॉइन कले ठीक अछि काहा टुडी के मागी देबे ना प्लीज एनीवन कैन रीसेंड दोस पीडीएफ जहां भी सेंड करा हिचा उधर ग्रुप में ठीक सेंड कर देबे जहां पाखरे अछि ओके सो होमवर्क देंतु हां मु भाबुची जे माने मते लागुची मु वन वे डिस्कशन कला हळ्या करूची तो शैल वी डू इन दैट वे तो आमे हां तो आमे माने भूली जाउची ना तो गोटे काम करिवा डिस्कशन आमे माने नंबर्स कहिदा केते रु केते क्वेश्चंस पर्यंत ओके तो व्हाट आई विल डू आई विल आस्क रैंडम क्वेश्चंस इन बिटवीन जोटा मते ठीक लागो से भीतर मु पचरिबी तो एवरीवन इज गोइंग टू आंसर लाइक दैट वे कैन वी डू सर एएसओ 2021-20 ओसीएस CA statement basis question आसुतिला so how to prepare see statement basis questions आपण सेतबळे करि पे जेतबळे when you know the facts okay if you don't know see state what you understand by the statement question if I'll say कि COP India is a biannual exercise between India and France is it a statement or not but you will be able to like if you know COP India exercise then you will be able to write ki, okay it is a exercise between India and USA if I'll put a statement ki the groundwater exploitations of India is 1/3 of less than 1/3 of overall exploitation groundwater exploitations at the world level is it a right statement wrong statement
if you have the idea कि India extracts more than 50% of the groundwater, what the global do, then you will be able to write answer those questions. Getting my point? See, when you now what you are thinking, you are thinking very ahead. Once you complete PT, once you complete your GK today, then you make the your information base strong. Then you will be able to deal any kind of statement it is being put in front of you. Why we are doing the GK today? Why not GK today? Why we are doing this type of MCQ format question? Because when you are going for the PT, then very minute type of questions now they will not be giving, because PT is more towards understanding the subject. Okay, so the static, even the information that is more important, that we are going to discuss in detailed way. But whereas in this type of MCQ type of questions, so the what you can say, the priority is based on the number of questions we are trying. So whatever the happenings that has done entire month, we are trying to cover up each and every part. Everyone clear with this? So just I need 2 minutes from your side. What should be our approach? So how we should go, so that I want, because it is not my time, because I am not going to write the examination. You are going to write the examination. It's not about class, it's not about the thing. I want you should get the maximum thing right when you are giving some time for the current affairs. If the questions are being asked from these type of topics, you should not be in a position to miss out. That you will regret a lot. Suppose a Cope India hi asigala first say, now you are not able to remember, you have ticked with a wrong option, so that you will regret a lot, because mu ete padhili class bhi karli, mo par material thila, but still I have done the wrong question, wrong answer. Getting my point? Just I want to know, whatever I have thought I am doing in that way, but what should be best approach for you, you tell me, so that we can redesign our course accordingly. Tell me anyone. Sir, homework दियंतु तापर discuss करिया. ठीक अछि. हाँ. So it's the best approach. Henceforth, we are not going to discuss each and every bit. It's better you read once. It's not. I'm not telling ki gote entire PDF completely gote din re padhi ka. Not. We are not going to do like that. You read. Okay. You read. You revise. Then we are going to take the class, and I'll going to ask you 30-40 questions every day. Okay. I'll be asking random persons, and based on that random persons, don't skip the class. Okay. It is not a humiliation part. I'm telling you, everyone is learning over here. When I have done mistake, you guys have rectified me. Ke jo mu CBI kotha koitli, I have told you Ministry of Home. I have cleared the examination. I am not having a information bank. Okay. Even I am a person, I can do mistake. You can also do mistake. Don't just stay back just because you are feeling shy. No, I want everyone should participate in this class. If you want a rank, you should participate. That's all. Okay. So here, no one is judging you. Okay. The end of the day, you need to get a rank. I need to see you cross the line. I'll be much more happy. That's all. Okay. So this is just a collaborative effort. We are here just to guide you, because end of the day, 90% of work has to be done by you. I'm here just for your 10%, just guiding you the right path where you should go. That's all. Okay. So I'm leaving this question because just it is like reading. So there are another only 240. So another 30 questions are there. So you can go through this. So remaining here 30 questions, and I'll be sharing you March ro PDF madhya mu aji pathai debi. Okay, May ro to mili ni porjanto. Maybe another 2-3 days they will be. I'll be getting that. I'll send you that. GK today ro pai worried huantuni. I'll be providing each and every PDF to you. Just my sincere request. See, you can ask me for 10 months. I can provide you 10 months continuously. But what will happen? Because maximum target, sir, amaro 1 year CA kariba ki. Ha, we will be doing more than 1 year. Okay, don't worry for that. So I am giving you targets. You do that. I'm not pouring in materials, because once you have lot of materials, now you get confused and you will not be doing anything. So whatever I am giving you, just first do that. Someone has asked me in the group, a month to say month to see, make yourself comfortable with 1 month first. Gote masa complete kale, thore taku revise karantu, then keep it aside. Take next month, but previous month, jota bhi. 12-15 months amo career achi. We'll start from last April and we'll do
till our examination. Okay, that is our approach. Everyone clear? Anyone having any deviations from discussed idea, then we are free to say. Maximum to participate kornanti. Okay, see, we are here just for you. I'm here to guide you. I want you to get select. No, I'm not giving you selected MCQ. First thing first. Okay, because I did hardly 240 questions. Just go through once. Na? Just go through once. Whatever the important questions I feel, na, I'll be asking. Suppose gote din re mu apananku 100, because 140 questions are there. Na, what we will be doing, we will be taking 2 class like that. Why is to waste lot of days? So we'll be taking two class. So 120 questions mein gote class rakhiba. Our next 120 page. The first 120, suppose I am telling one day. Okay, I'll be asking whatever the 40 most relevant questions I feel among those 120 questions. I'll be asking you. Be ready. You are going to answer, so that in that way we can learn much more. Because see, while coming to the class, you will be having, okay, I may get asked about this particular question, so I must be prepared for that. So like that mindset also sometimes helps you to remember much more efficiently. Okay. Anyone don't agree on that? Next class आमे कौन पढ़िबा पढ़ी के आसीबो. हाँ, फर्स्ट एटा को कंप्लीट करंतु एंड मार्च रो भी एटलीस्ट 100 पर्यंत देखि जंतु. ठीक अछि, मार्च रो 100% and let complete this. And see, one more thing I just want to tell you, maybe another 2-3 days or 3-4 days I'll not be available because I have to go for departmental exam to Cuttack. So once I'm back, I will continue this what you can say, whatever initiatives we have taken. Rest assured, your current affairs will be dealt with. Okay, because जदि आमे सही हिसाब रे करिबा monthly, every day we will be taking माने every month we take only 2 days. Okay, so like that. Then if you're going planning for 15 or 16 months also, it is 1 month affair. So 1 month रे आमे complete कर परिबा at least GK today. As far as PT is concerned, that 1 month is sufficient for PT. We'll be winding up the PT. Ebe ame economy korchu. Economy is little boring, I understand, because most of the basic concept we are not that thorough with. Okay, because kete jana eite achan jo mane Mrunal sarankor economy note पढिचंती. Anyone? सर मु तांको लेक्चर देखिल सर. पूरा देखछन. पूरा देखछन तो. हां सर पूरा देखि सर. पूरा तापर सर एबे हां आज्ञा तो ठीक सर अछि. सेटो टिके आज्ञा जदि मृणाल सारंग जी करिसंती और जदि आपण ताकू ठीक से बुझिसंती बा रिवाइज करसंती, देन आई डोंट फील यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम विथ इकोनॉमी इज कंसर्न. Because Mrunal Sanko economy with Win 23, Win 20, whatever, till Win 23, whatever he has taught, it is the best thing as far as economy is concerned. See, we have to accept what are the best material available in the market. Okay. If you have not done, then don't dig into Mrunal material right now, because it is more than 1000 pages material. So बर्तमान करी बसिबे, बाकी सब जिंस रहि जो खाली Mrunal economy रे एक्सपोर्ट की पढे. Don't do that. Okay, whatever PTs and everything we are covering up, जदि किछि बेसिक NCERT वगैरह पढियार अछि पढ दियंतु, बेसिक कांसेप्ट गेन कर दियंतु, PT वगैरह करिवा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिवा, and we'll be ready for the examination. Okay, reverse mechanism also works. Getting my point? यस सर. Okay, okay. तो मु जो अंडरलाइन करिकि देइथली आपन को माने इकोनॉमी रो पीटी, whether anyone has gone through those? See, frankly speaking, that is not my underline. I have taken from some trusted sources, and he has done a good work. Okay. So who has already gone through that? माने मु कहूनी पूरा कंप्लीट करिया कथा, but at least adequately जति दूर पढ़ी तो at least सेति तो कंप्लीट करि ही थिबे आपण माने. सर आउ थरे टिके पीडीएफ ता प्रोवाइड कर दंतु, बहुत पीटी and GK today. Yes, I'll be sharing this. My request to any of you who have all the PDFs, just once resend in the group, so people. सर मु कर दे सर मो पाखरे सर मु कर. ठीक अछि. Okay, you will be getting your PDF, but still, if anyone having any problem, you are free to ask in the group. We are not putting any type of admin access or something. Okay, तो देखो जते पर्यंत आमे आमो अप्रोच मु प्रथम दिन क्लियर करथली. If you have not attended that class, I am repeating another in 2 minutes. First thing, we'll be dealing with the PT and we'll be dealing with the
GK today. Okay, PT will give you a upper hand in both the prelim and the specifically mains and prelim also. Prelim re jetobale kichi depth understanding current affairs astauchi, that will help you. Okay. Second thing, obviously answer writing ro structure preparations pai, mains ro jekonosi bi subject pai, it will give you very good advantage, especially for your even in your optional writing also. Optional re bhi bahut gude, you can say you will be getting a questions that you can have a case study something like this from the current affairs. That is also very helpful, and we will try to understand important PT whatever it is given in a very you can say elaborative way. No issues on that. Till date we have understood certain points. Kichi jo points guda kochi that will be dealing with, no issues. One more thing, economic PT tike boring lage, but once we are done with that, then we'll be moving to the environment part and the science and tech part. It will be much more interesting and good for you. Getting my point? So our objective rahibo at least 3 PTs we are going to cover. One is economy, one is your science and tech, another is your um, environment and ecology. Okay, these are very important for your prelim. You can say about the IR, polity, social. See, these are polity is you can leave it, no issues. Apart from IR and social, these are more important towards your mains rather than your prelim. So if we are not able to complete those before prelim also, no issues. Okay, so it's not we are going to drag our class till your day before your prelim. So we will have planned this to wind up your you can say current affairs within 1 month, so that you are free to revise for another 2 months and so. IR material ray nahi. See, there is no clarity regarding the IR. There was a point it is mentioned na interstate. So if you have gone through the polity, ଯେତେବେଳେ polity ପଢୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ state ଲେଖା ହୁଏ. State ର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ବା ଏମିତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ. State also means country, nation. So United States of America, it's states. Getting my point? So till examination is not conducted, you don't know. So you can't skip your IR part. Okay. So interstate, still I feel interstate, it means IR only. Sir, mains detail syllabus re mention achi Odisha and neighboring state. See, Odisha and neighboring state is there. I know this. Okay, I am not telling ki Odisha neighboring state pacharibo nahi. It is there, but do you think they will skip IR? I don't think they are going to skip the IR. Once question will be framed, you will come to know. So it's my sincere advice: don't skip the IR part, at least for the mains. Okay, do go through those. At PT to देखी जिबार अछि, IR रे कोन देखी बार अछि, जोटा recent news रे अछि सेई गुडा को ही आसीबो सर. Prelims this year top रहिबो. Tough. Okay, why it will be tough? If you know the answers, right? If you don't, see, but I don't know how you approach to the prelim. My approach to the prelim is always first is assess yourself. So what is your accuracy? How is your guessing style? Whether you are doing more right, more wrong. And mind my word, the cutoff, if same trend continue, it will not be beyond 80. Okay, 80 to 85 like that, it will hover. So you should not approach, you should not attend that much of classes, questions, so that it will result a lot of negatives. If you are adequate in accuracy, so limit yourself. Jadi first go re apanku 30 pakhaki questions jati thik laguchi ki that you have done with a very concrete knowledge, then you don't need to go 100. Why you are supposed to attempt 100 questions? You can limit yourself in 60, 65, 70 like that. No, I am not telling you do like that. If you are good in accuracy, then that approach should be different. I know people जो माने UPSC clear करिसंती से माने 9900 attempt करछंती. बुझि परछन ना? तो that is different thing. When you are uncertain, when you are guessing, then obviously guess everything. Why to guess specific things? Because anyway, your prelim clear, whether you are able to clear the prelim is not yet assured, because everything you have guessed. So that may go wrong. If you're guessing only, then guess all the questions. Attempt maximum possible. Okay.
तो लेट्स डू काली हमें केती जे करथले स्टेट फाइनेंसेस सॉरी थिला कि स्टेट फाइनेंस सॉरी थिला ना सॉरी नहीं ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା ମାନେ ହବ ସାର୍ କରୁଥିଲେ କରୁଥିଲେ ନା ठीक अच्छे स्टेट फाइनेंस कथा हमें कहते स्टेट रो तीन प्रकार जिनिस माने तीन प्रकार तार सोर्स थिला गोटे जे टैक्स रेवेन्यू स्टेट रो निजो टैक्स आ गोटे डिवोल्यूशन फ्रॉम द सेंटर जोटा सेंटर रो जो टैक्स गुडा को जो फाइनेंस कमिशन रो रिकमेंडेशन रे स्टेट पाखु को आसे किछि परसेंटेज सेटा नॉन टैक्स रेवेन्यू मु कथा कहतली एडमिनिस्ट्रेटिव फीस हो बा तांकर स्टेट रो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रो डिविडेंड्स हो से गुडा को अदरवाइज ग्रांट्स दी प्रकार इधर स्टेट को आसे नहले बेले बेले डायरेक्टली लोकल बॉडीज को मते ग्रांट्स आसे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कैन बी ओके तो जेमती आर्टिकल 275 से कौन कहूची कि माने पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट टू माने अंडर आर्टिकल 275 टू मीट द रेवेन्यू गैप तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करे किछि माने किछि ग्रांट्स प्रोवाइड करे से grants को हमें कौन कहूचु that grants is called what a second it is called the revenue deficit grant okay it is called the revenue deficit grant according to article 275 devolution hella pore madhya jodi further it there is some you can say grant not directly grant in aid so that is called post devolution revenue deficit grant okay तो discretion grants किछि अछि जोटा कि central government निज discretion रे दे परियो that is under the article 282 one second हाँ नेक्स्ट नेट जो डिविजिबल पूल रहिला जो फाइनेंस कमिशन रो रिकमेंडेशन अंडर आर्टिकल 280 दैट वी हैव डिस्कस्ड जो ए पार्ट जो आछी डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 फाइनेंस कमिशन रिकमेंडेशन दबो ओके नेक्स्ट इनिशिएटिव्स एटा तो हमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अच्छी ताकू छाडला पर रिसेंट इनिशिएटिव्स कोन निया हेची ताकि जो स्टेट रो फाइनेंस को फर्दर स्ट्रेंथन करा जाय पारियो फर्स्ट जिंस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द बोरोइंग स्टेट्स गुडा को बेले बेले कोन करछने मन इच्छा बोरोइंग करछन्ती तापर कोन से माने तांकर आज डेटा में बहुत स्टेट्स देखुछु जो से माने पॉपुलिस्ट पॉलिसीज टाइप रो होची फॉर दैट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर स्टेट फाइनेंस इन प्रॉपर्ली तो तांको गोटे लिमिट फिक्स करा हेची ओनली द 3.5% एवरी ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू फिक्स द सेंट्रल एटा जदी क्वेश्चन आसे व्हाई आई एम टेलिंग लाइक दिस बिकॉज़ क्वेश्चन कैन आस्क कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट फिक्स करिवो now already मन इच्छा state borrow करि परबे no central government has to fix the limit how much percentage state can borrow so for the year financial year 2022-2023 it was fixed at 3.5% जेतोल कोविड थिला it was on 5% सेतोल 5% फिक्स करा हितला okay next inclusion of the माने off budget borrowing गोटे एटा off budget borrowing कथा कहउतलु not that important then lowering the एटा गोटे इंसान मन रखिबा ways and means advances okay ways and mean advances की दोची एटा गोटे टाइप रो माने आरबीआई थ्रू लोन मिलुची काहाकू स्टेट को भी मिल परिबो यूनियन को भी मिल परिबो लाइक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल टॉलेटी को गले लेट्स डू दैट फर्स्ट कोडे गला हां दिस इज वेज एंड मीन्स व्हाट इज दिस एटा गोटे टाइप रो टेम्पररी ग्रांट जोटा आरबीआई दोची काहाकू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को अगेन वन मोर थिंग वी हैव टू एटा होची रीपे करिया को पड़े विद इन 3 मंथ्स भितरे आउ एंड दिस विल जो इंटरेस्ट चार्ज हो दैट विल बी एट द रेपो रेट ओके एटा जो बोरोइंग हबो वेज एंड मीन्स एडवांसेस अंडर रे सेटा जो एफआरबीएम एक्ट गोटे अछि माने फिस्कल पॉलिसी एंड बजेट सॉरी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजेट मैनेजमेंट एक्ट अछि सी एक्ट अंडर रे एटा आसे नाही why it is not comes under that act have you come across this particular word FRBM सबु स्टेट रो और सेंट्रल गवर्नमेंट रो निजर गोटे FRBM अछि FRBM रो अर्थ कोन से माने केते तांकर फिस्कल पॉलिसी को केते परसेंटेज भीतर रखिबे रेवेन्यू डेफिसिट को केते परसेंटेज भीतर रखिबे सो लाइक दैट दे हैव पुट द लिमिट्स ओके तो ए जो एफआरबी सब स्टेट रो गोटे इंडिविजुअल एफआरबीएम अछि ओके तो ए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस जोटा उठौचंती सेटा एफआरबीएम अंडर रे आसे नाही बिकॉज़ दे आर गोइंग टू रीपे ना विद इन 3 मंथ्स दे आर गोइंग टू रीपे तो काहे के से माने ताको एफआरबीएम भीतर को नै के आसीबे सो फॉर दैट आ गोटे कोन ए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस टू चेक द फिस्कल डेफिसिट यस तो नॉट ओनली फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट मध्ये से भीतर आसीबो तो ए जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस कथा कहले ए भीतर गोटे स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी गोटे अछि जोटा हमें एसडीएफ को जो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी जोटा कि स्पेशल टाइप रो गोटे वेज एंड मीन्स यू कैन से
एडवांस जोटा सेटा कोन हबो इट विल बी लेस माने से जो परसेंट तांको ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करा हबो इट विल बी लेस देन द रेपो रेट सपोज रेपो रेट इज 6.5% तो जदि स्पेशल एसडीएफ रे से माने बोरो करिवे द इंटरेस्ट चार्ज विल बी लेस देन रेपो बट व्हाई इट इज लेस देन रेपो बिकॉज से जो लैंडिंग से माने नेबे से जो एडवांसेस आरबीआई टू उठेबे दैट विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किछि कोलेटरल रखिबे एंड दे आर गेटिंग द लोन्स गेटिंग माय पॉइंट ओके सो आउ गोटे जिनस कौन कराई रिसेंटली जो मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट लिमिट थिला जोटा कि आगुरु 50 डेज कराइतला कोविड समय रे दैट वाज अगेन ब्रॉट डाउन टू 36 डेज सो व्हाट वी हैव सीन कि स्टेट रो बोरोइंग को 3.5% ऑफ द स्टेट जीडीपी सहित फिक्स करा ही गला वेज इन मींस एडवांसेस जोटा थिला सेटा को मध्ये टे कम करा ही गला वर्तमान आ ओवरड्राफ्ट रो जो लिमिट थिला दैट वाज ब्रॉट डाउन टू 36 डेज ओके एबे भी गोटे स्कीम अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड द स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओके माने जदि स्टेट निजर किछि एमती डेवलपमेंट करछि जोटा कि कैपिटल एसेट क्रिएट करिवो स्टेट पय एमती नै जे लोन आनी कि कालिया स्कीम रे बांटिबो बा टंकिकिया चावल बांटिबो नो नॉट इन डेरोगेटिव वे दीज आर द पॉपुलिस्ट स्कीम सेटा स्टेट निजो हिसाब रे फंड करिवो सेंटर त आपमे फंड्स दो नाही ओके तो जदि किछि स्पेशल जदि आमे किछि सपोज गोटे आईआईटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करे माने आईआईटी ऑब्वियसली इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज स्टेट गोटे भलो गोटे तार टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोटे मेडिकल इंस्टीट्यूट गोटे करूची बा किछि एमती रिसर्च लैब एस्टैब्लिश करची इट इज अ कैपिटल एसेट ओके फॉर दैट डेवलपमेंट they can lend up to 1 lakh crore पर्यंत नहीं पारे it will be for the 50 years and it is the interest free loan that facility is there it is under the special assistance to the state for the capital investment क्वेश्चन आपन को ना एडा मेंस रे भी आस जिवो एमती टाइप रो जिंस स्टेट रो फाइनेंसेस कोन व्हाट आर द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज हेल्पिंग सो दिस इज अ वेरी यू कैन से वेरी यू कैन टिपिकल आंसर a very good answer you can put in the mains also okay so this is all this is about the state finances coming to next one that is called the states FRBM मु जोटा जस्ट कहूतिली कि स्टेट रो निजरो गोटे FRBM थाए सेंट्रल गवर्नमेंट रो FRBM अछि इट इज कॉल्ड द फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 सेटा कोन पई हेतिला बिकॉज़ निजरो फिस्कल डिसिप्लिन रखिबो मन इच्छा खर्च करिवनी बिकॉज़ सपोज आपनकर सैलरी अछि 50000 इट इज नॉट लाइक एवरी मंथ यू आर गोइंग टू स्पेंड 60000 तो एंड ऑफ द year you are into the depth of माने 1.2 lakhs रो डेट रे छंती सो इट इज नॉट लाइक दैट तो आपन को निजरो खर्च ऊपर भी किछि गोटे चेक एंड बैलेंस लगे पड़िबो लाइक दैट ओके सो फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट जेट माने डेट टू जीडीपी रेशियो केते हबो ताकू बैलेंस आउट करिया पई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कोन रहिबा दरकार गोटे पर्टिकुलर इकोनॉमी रो सब स्टेट्स को निजरो एफआरबीएम एक्ट अछि ओके तो एफआरबीएम एक्ट अंडर को डॉक्यूमेंट्स आछी एते डिटेल्स हमको जिबार नाही जो एनके सिंह कमिटी थिला हमर फाइनेंस कमिशन रो तो से माने किछि रिकमेंडेशंस देथिले जेमति कि हम फिस्कल डेफिसिट को 2.5% रे लिमिट करिया दरकार 2023 सुधा देन रेवेन्यू डेफिसिट को 0.8% रे एंड डेट टू जीडीपी जो रेशियो था इट शुड बी 60% ओके 40% फॉर द सेंटर एंड 20% फॉर द स्टेट दीस आर द रिकमेंडेशन दैट वाज गिवन बाय द एनके सिंह कमिटी ओके तो हाँ ए जिनसटा ऑलरेडी मु डिस्कस करिथिली द बोरोइंग बाय द स्टेट ओन्ड कंपनी नै एटा डिस्कस करिने हमें करिबा तो बोरोइंग बाय द स्टेट ओन्ड कंपनीज एंड द स्पेशल पर्पस व्हीकल और द एजेंसीज टू बोरो फ्रॉम द मार्केट सो इट हैज फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्फॉर्म दैट ए सब फल रे कोन होची जहां भी से माने बोरोइंग करछन दैट नीड्स टू बी ब्रॉट अंडर द एफआरबीएम लिमिट ता अर्थ कोन सपोज गोटे जिनस ओडिशा गवर्नमेंट ऊपर एफआरबीएम रो किछि लिमिटेशंस अछि तो व्हाट ओडिशा विल डू ओडिशा गोटे एमती गोटे बॉडी क्रिएट करियो जेमती हमें इफको कथा कहूचे इडकोल कथा कहूचे बा किछि भी एमती गोटे बॉडी क्रिएट कला बर्तन ओडिशा गवर्नमेंट को आमे बरो करू हमर से पर्टिकुलर माने अलगा गोटे एजेंसी अछि से बरो करछ सो इट इज कॉल्ड लाइक ए स्पेशल पर्पस व्हीकल कहूछ हमें किबा गोटे सपोज ओडिशा गवर्नमेंट रो माने ओडिशा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन जो अछि ओएचपीसीएल जहां भी सेही टाइप रो कंपनी किछि अछि तो सी बरो करछ तो सेडा हम बोरोइंग नो इट इज नॉट लाइक दैट दीज आर योर कंपनी these are your special purpose vehicle so whatever the borrowing they are doing that needs to be brought under the FRBM also okay so that was there so article 293 ro sub clause 3 se kon kohuchi provides that the state may not without the consent of the government of India raise any loans if there is still outstanding part of the loan ta arth kon jodi gote loan suppose gote 1 lakh crore ke nei chi gote state बर्तन से 1 लाख करोड़ रीपेमेंट कंप्लीटली है ही नहीं
there is still outstanding amount is there. So till that point, state government cannot take another loan without the permission or the approval of the central government. That is under the article of 293 subclause 3. Okay, clear? Next. तो किछि माने नेट बोरोइंग सीलिंग लिमिट्स एवरी स्टेट रो जो कहतली बोरोइंग लिमिट्स के स्टेट करूची यूनियन गवर्नमेंट सेट करूची एनबीसी कथा में जो कहछु नेट बोरोइंग सीलिंग फाइनेंशियल ईयर पे केते सेट कराइची 3.5% जस्ट हमें डिस्कस करले ताको तक एटी गला हमरो स्टेट रो एफआरबीएम कथा नेक्स्ट कमिंग टू द म्युनिसिपल फाइनेंसिंग व्हाट इज म्युनिसिपल फाइनेंसिंग हमें जानछु 74th अमेंडमेंट एक्ट रे अर्बन लोकल बॉडीज को क्रिएट करा हितला तांकर फंड्स वगैरह पाई भी किछि प्रोविजन थिला इधर सेंट्रल गवर्नमेंट रो से माने डायरेक्टली फंड्स पाई परिबे गोटे प्रोविजन अछि सेकंड प्रोविजन होछि कोन स्टेट गवर्नमेंट तांकर जो स्टेट रो गोटे फाइनेंस कमिशन रहइबो जेमति बर्तन 15th फाइनेंस कमिशन चलछि सेंट्रल गवर्नमेंट रो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 280 सेमिति स्टेट रो भी गोटे फाइनेंस कमिशन हबो जेबोठू पंचायत राज असला गोटे स्पेशल स्टेट लेवल गोटे फाइनेंस कमिशन होछि जा काम होछि स्टेट रो जो टैक्सेस अछि तार केते परसेंटेज दिया हबो लोकल बॉडीज को सेटा से डिसाइड करूजी सेटू किछि पैसा पाउचंती ताकू छाडला पर लोकल गवर्नमेंट रो भी निजरो किछि एसेट्स अछि जेमति देखुथिबे आपनक एरिया रे गोटे म्युनिसिपालिटी रो गोटे कल्याण मंडप अछि तो सेठी को सेमान तो यूज करछन तार किछि रेंट वगैरह तो नउचंती तो सेगुडा को तांकर ओन अर्निंग तांको निजो एसेट रो सेमान को अर्निंग होछि सो दीज आर द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ओके किंतु যদি কোশ্চেন্স আসে গোটে সেকেন্ড যদি কোশ্চেন আসে कि कॉन्स्टिट्यूशन रे केमिति फाइनेंसिंग हबो म्युनिसिपालिटी रो बा पंचायत रो तार डिटेल एक्सप्लेनेशंस करा हिची बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट no it is not like that so it is written over here however it does not provide it does not 74th amendment act does not provide for a corresponding municipal finance list in the constitution it has been completely left to the discretion of the state government तो म्युनिसिपालिटी बा पंचायत रो फाइनेंशियल लिस्ट कोन से माने को जागारो निजो फाइनेंस को गैदर करि परिबे एटा कोनसी स्पेसिफिक मेंशन हे नाही एटा स्टेट गवर्नमेंट्स को हाथ रे छडाई गला मे बी जदि आप ओडिसा रे देखुचंदी म्युनिसिपालिटी गोटे पर्टिकुलर सेक्टर रो टैक्स आदाय करूची अन्य स्टेट रे सेही अथॉरिटी में भी म्युनिसिपालिटी पाखरे नथाय बा वाइस वर्सा मध्ये हे परिबो सो दैट वी शुड टेक इनटू कंसिडरेशन so this is all about a municipal financing coming to next one that is called taxation so taxation re first which is gst goods and service tax hame jani chu it is a comprehensive multi stage destination based and single domestic tax काहे केडा कलु बिकॉज जो प्रथमे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस गुडा को थिला से गुडा को कैस्केडिंग इफेक्ट होतला से मानकर गोटे टैक्स ऊपर आ गोटे टैक्स पड़ जातला तो फाइनली मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सेस दो को पड़थला तार मल्टीपल टैक्स स्लैब्स गुडा को थिला इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग टू गेट अवे विथ दैट तो गवर्नमेंट कोन कला जीएसटी नै कि आसिला तो फर्स्ट टाइम पे केलकर टास्क फोर्स ताको सजेस्ट करथला 2003 रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101 थ्रू रे आसिला एंड इट वाज लेविड ऑन एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन जोटी वैल्यू एडिशन हो ता ऊपर टैक्स पड़िबो ओके तार कंपोनेंट्स कोन अछि जेमति सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी रो एंड आईजीएसटी जनरली हमें सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी देखुछु ता अंडर आर्टिकल 246 ए कोटे इंट्रोड्यूस कराला एटी कोन कोची पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैज द पावर टू मेक द लॉज विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड बाय द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट तो जीएसटी बाबत रे जति स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज which article has given them the power it was under the article 246 a okay तो सिमिलरली किछि आर्टिकल्स को ता एम्बिट रो बाहर को रखा होला जेमति अल्कोहल गोटे कोचो प्रॉपर्टी टैक्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटीज ए सब को बाहर मध्ये रखा गला जीएसटी काउंसिल कोटे फॉर्मेशन करा होला अंडर द आर्टिकल 279 ए ओके यूनिक रिप्रेजेंटेशंस रहइबो स्टेट आउ सेंटर बोथ रो ए जीएसटी काउंसिल रे ओके माने तांकर जो चेयरपर्सन रहिबे से होचंती यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और एवरी स्टेट रो जो फाइनेंस मिनिस्टर जे भी चार्ज थिबे दे विल पार्टिसिपेट इन द जीएसटी काउंसिल ओके वोटिंग केमती 2/3 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट रो 1/3 एंड 2/3 इज रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट किछि अन्य टर्म्स कोन सिन गुड्स हमें कोचो व्हाट इज द सिन गुड्स
सिन गुड्स होची माने जो जिंस गवर्नमेंट माने सोसाइटी चाहेनी सोसाइटी पे जोटा डेट्रिमेंटल गुड्स रहिला जेमति टोबैको हला अल्कोहल हला तो गोटा को सिन गुड्स तो ता ऊपरे जो माने गोटे जो टैक्सेस पड़े ताको सिन टैक्स को हुए ओके खराब जिंस सेति पे नेक्स्ट होची सर्कुलर ट्रेडिंग कोन किछि जण ना मिसयूज करछन टैक्स को बिकॉज जीएसटी गोटे प्रोविजन अछि इट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट सपोज गोटे टायर मैन्युफैक्चरर गोटे कंपनी अछि तो टायर मैन्युफैक्चरिंग पई से रबर ताकू दरकार तो जे ता पूर्वरु माने गोटे जण प्रोक्योर गोटे कंपनी अछि जे रबर मैन्युफैक्चर करछि तो से रबर मैन्युफैक्चरिंग करिया फल जो वैल्यू एडिशन हला ता ऊपर से जीएसटी देइदला बर्तमान जो माने जे टायर मैन्युफैक्चरर अछि से बर्तमान से रबर को नेकी टायर बनेला तो टायर रो प्राइस सपोज 10,000 तो 10,000 ऊपर से प्राइस दबो नहीं से कौन करिवो ता ऊपर ताकू सेतिकी ही से टैक्स दबो जोटा कि सी वैल्यू एडिशन कला सी एक्स्ट्रा एडिशन कला बिकॉज ऑलरेडी रॉ रबर पई तो ऑलरेडी टैक्स दिया ही जाइछि गेटिंग माय पॉइंट सो इट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट तो जणे माने सेकंड वाला कौन करिवो फर्स्ट वाला रो जो ता भाउचर्स अछि ताकू जेतोले प्रोड्यूस करिवो एक्जेक्टली हाउ इट इज ऑपरेट आई डोंट नो बिकॉज रेवेन्यू साइट रे गले जणा पड़िवो सेटा जणे आईआरएस ही बेटर कहि परिबे तो सेटा से जदी ताकू माने से जो प्रोसेस रे ताकू जो टैक्स रो कंसेशन मिलुची इट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट मच वी शुड अंडरस्टैंड दैट्स ऑल कि जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स उतरा ताको ओवरकम करिया पे व्हाट गवर्नमेंट हैज केम विथ ओके तो ए पर्टिकुलर जो गोटे प्रोविजन अछि ताको केते जण फायदा उठांती माने गोटे साइड रे दैट इज व्हाट रिटन ओवर हियर सर्कुलर ट्रेडिंग रिफर्स टू फ्रॉडलेंटली अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द ट्रेडर्स बाय इशूइंग द इनवॉइस विदाउट अवेलिंग एनी रियल गुड्स एंड सर्विस तो से माने कोन करछन बारंबार किछि गुड्स एंड सर्विसेस तांको भीतर ही चलथाय किछि जिंस एक्चुअली मार्केट को जाउनी ओके नो वैल्यू एडिशन इज बीइंग डन बट से माने ना सही वाउचर्स को देखि कि फ्रॉडलेंट वे रे से माने इनपुट टैक्स क्रेडिट गवर्नमेंट रू सोर्सेस रू कलेक्ट करछन इट इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रेडिंग दैट मच यू शुड नो नेक्स्ट जीएसटी कंपनसेशन टैक्स जेतोले जीएसटी आसिला सेतोले बहुत गुडे स्टेट ना ताको यू कैन से प्रोटेस्ट करथले कि हमको जीएसटी लगया फल रे बहुत गुडे हम लॉस हैला लाइक दैट तो टू ओवरकम दैट व्हाट गवर्नमेंट हैज डन गोटे कंपनसेशन एक्स्ट्रा टैक्स लगेला तो से माने जो माने लेविस गुड्स वगैरह सहित बा किछि पर्टिकुलर गुड्स सहित और से टू जा एक्स्ट्रा आसीबो जो स्टेट गुडा को लॉस होतला से मानन को नेक्स्ट 5 इयर्स पर्यंत दबा को से डिसाइड करथला जोटा कि 2022 रे सरी जाउथला बट रिसेंटली ताको पुनी एक्सटेंड कराई छि 2026 पर्यंत बट एटा डिसाइड करा हेनी जे जो नुवा कंपनसेशन टैक्स आसीबो से आसीबो सेटा स्टेट को शेयर करा हबो ना नाही सेटा से बर्तन डिसाइड करनी बिकॉज जीएसटी एक्ट रे थिला 5 इयर्स पर्यंत से शेयर करिवो बर्तन जीएसटी काउंसिल डिसाइड करे दैट विल सी दैट वी शुड नॉट बॉदर अबाउट जीएसटी एप्लीकेबिलिटी ऑन प्री पैकेज एंड लेबल्ड गुड्स ता अर्थ कोन जदी प्री पैकेज किछि माने गुड्स अछि जेमति कि सपोज 25 किलिया अट्टा तो आपण 25 किलिया अट्टा किनुचंती तो एडा ऑलरेडी पैक हे गयो अछि आशीर्वाद रो तो नाउ दैट अट्रैक्ट्स 5% जीएसटी बट जदी जने 25 केजी ही किनुची बट लूज रे किनुची देन ता ऊपर कोनसे जीएसटी लागिबो नाही दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंटी प्रॉफिटियरिंग कोन रिसेंटली एंटी प्रॉफिटियरिंग पई कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करा हेछि एंटी प्रॉफिटियरिंग कोन जदि कोनोसी एंटिटी रहिला बा बिजनेस एंटरप्राइज रहिला जे कि जानी सुनी कि एमती किछि एक्टिविटी करछि जाफले ताकू एक्सेस प्रॉफिट होछि बिकॉज़ इंडिया रे ए जिंस अलाउड नो आगु एमआरटीपीएस एक्ट थिला पर सीसीआई आसला कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया तो कंपटीशन ऑफ कमिशन इंडिया कोन करछि इट शुड बी यूनिफॉर्म ओके तो ए जीएसटी रो इम्प्लीमेंटेशंस फल रे जदी कोनोसी गोटे पर्टिकुलर बॉडी को एक्सेस प्रॉफिट होछि फ्रॉडलेंट वे रे हो बा इल माने इम्प्लीमेंटेशंस जो को होछु दैट शुड बी चेक्ड वन अथॉरिटी शुड बी देयर इट वाज द कंपटीशन कमिशन ऑफ इंडिया क्लियर तो एतिकी थाओ मु आगु को डिस्कस करिवि बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी लेट ओके सो डू वन थिंग जोटा पे हम पढ़ी छे जोटा पे हम पीडीएफ वगैरह शेयर करछे प्लीज टिके निज आउट भी पढ़िबे so that when we are discussing again in the class it will have more impact on you